So what have we joined here for? हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं किस लिए? ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया है for a particular purpose. Can anybody tell me what is the reason? Vinita ma'am, can we have the video on please? सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लें प्लीज. लेट्स मेक इट वेरी वेरी इंटरैक्टिव. क्या आप सब लोग वीडियो ऑन कर लेंगे प्लीज? वनीता मैम, संगीता मैम, नरेश सर, संतोष सर. So what have we gathered here for? Anybody? Disabled by admin. Okay, how we live medicine free life. Jitinder sir says how we live a medicine free life. कोई बता सकता है how can we live a medicine free life? Any clue? Any clue? फिर हम बताते हैं आप लोगों को. Anybody from the participants? How can we lead a medicine free life? Food as medicine, Sri Ram sir says. Exercise, living naturally, okay. Staying natural. Vanita ma'am, how do we stay natural? I think we are all very natural. By the help of yoga and meditation, okay. So 21st June, the International Yoga Day is just around the corner, and very good if everybody has the awareness that yoga हमें करनी चाहिए. By taking fruits and salads, okay. So are we on a diet or something? No. सब कुछ खा पी के मस्त रहेंगे, बट अपने शरीर पे काम करेंगे, राइट? विल वर्क ऑन आवरसेल्व्स. नो डाइटिंग. डाइटिंग हमें खराब करता है. बाय मेडिटेशन एंड योगा. सो नाउ लेट मी टेल यू. Yes, Sonal ma'am, if your husband has foot drop, we can definitely help you. Okay. तो आपको करना क्या है? नेचुरल मेथड से, जैसे काफी पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि नेचुरल वे से आप खुद की रिकवरी कैसे कर सकते हो. सो इंटरनली जो इंटरनल ऑर्गन फंक्शन है उसको इंप्रूव करना है, जो वीक फोर्सेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है. ये कैसे करना है हम लोग ये बताते हैं अष्टांग चिकित्सा में. कुछ पुरानी सी चिकित्सा ऐसा समझ में आता है, अष्टांग चिकित्सा. तो पुराने टाइम में तो वैद होते थे. We never used to have big degrees and doctors. So what used to happen? आप अपने पे खुद से काम करते थे, राइट? अभी हम लोग भागते हैं डॉक्टर के पास. उई दर्द हो गया, उई उठ नहीं पा रहे, भागे डॉक्टर के पास. बट क्या डॉक्टर आपको सब चीज का सोल्यूशन दे रहा है? कोई परमानेंट सोल्यूशन डॉक्टर दे पाते हैं? नहीं दे पाते. तो हमें चाहिए कुछ ऐसा कि जिससे हमारा परमानेंटली चीजें हमारी ठीक हो जाए, हमारे कंट्रोल में आए. यस और नो? गिव मी अ थम्स अप. So now what do we need to do? How many people are curious to know what exactly we need to know? क्या करना है आपको? कितने लोग क्यूरियस हैं जानने के लिए कि अष्टांग चिकित्सा वेबिनार में तो हम आ गए. Now what is it all about? Nobody is curious to know? Okay, a couple of yeses. So are you going to give me some of your screen time? If I have your permission, I would like to share the screen. Okay. Rekha ma'am writes, all of us are curious. Okay. So just give me 2 minutes. I'll share the screen. So Ashtaang Chikitsa online therapy for Neuro Musculoskeletal problems. The topic of today's webinar, Ashtaang Chikitsa online therapy classes for Neuro Musculoskeletal problems. Please check your mic. It's not proper. Okay. The sound is not. Okay, just a
Okay, Namaskar. I welcome you all to the Ashtaang Chikitsa webinar. My name is Rachna Bothra and I'll be your host for today's webinar. I'm a part of an organization called Avisa Healing and Fitness Private Limited. So in today's webinar, we will present to you a unique therapy for curing neuromusculoskeletal problems that you or someone in your family may be suffering from, but have not yet found permanent relief despite spending a good amount of money on various treatments. So now I'd like to introduce you all to Swami Raj Vibhuji, a rare Kumbhak yogi. Swami Raj Vibhu has been transforming lives of thousands of people who have not found any relief even after years of using allopathic medicine, not only in India, but Europe and the US as well. He has taken people out of chronic diseases like thyroid, BP, heart, diabetes, and even life-threatening diseases like cancer. At Avisa Healing and Fitness, we are reviving Ashtaang Chikitsa to address the structural issues of a human being. So when we say structure of the human body, the musculoskeletal system is one of them. How the structure of the human body can function in its best possible way, that's our purpose at Avisa Healing and Fitness. It's a profound way of addressing the aspects of a human body. Now, who is this webinar for? For people who are tired of temporary treatments and are looking for a natural and permanent solution. For people who want to take charge of their health in their own hands and are willing to work on themselves to come out of their health problems. Reversing neuromusculoskeletal problems with Ashtaang Chikitsa, freedom from pain and medicine, जैसे काफी लोगों ने participants में से बताया. So balancing of body at 8 levels. ये 8 सॉफ्टवेयर है हमारे शरीर में जो imbalance में जब आता है तब हमारे शरीर में disease की शुरुआत होती है. So what are these 8 levels which will be talked about in details by Swami ji. Okay. So Shrishti Sharir, गर्भ शरीर, दोष शरीर, मर्म शरीर, प्रमाण शरीर, संख्य शरीर, प्रकृति and the विकृति शरीर. Ashtaang Chikitsa can cure a list of some of the commonly faced problems. Of course, the list goes on and on. Knee pain, lower back pain, hip issues, pain in the leg, drop foot, जैसा कि अभी एक पार्टिसिपेंट ने मुझे पूछा भी था. स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, स्लिप डिस्क बल्ज, वीक स्पाइन, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, टेनिस एल्बो, rheumatic arthritis, osteoarthritis, osteoporosis, dislocation, neuropathy, and the nerve issue. Let's hear from Swami Raj Vibhuji. So I'll just tell you how we are going to proceed in the webinar. अभी आप स्वामी राज विभू जी से सुनने वाले हैं क्या exactly अष्टांग चिकित्सा है और कैसे आप अपनी current condition से बाहर निकल सकते हैं. Then of course we will have somebody who has been attending the Ashtang Chikitsa and how he or she has benefited by it. उसके बाद आपको program details share किया जाएगा. And last but not the least, Swamiji himself will be coming live to answer all your questions. So आराम से बैठ जाएं. Put your contact numbers, your problems in the chat box. I will be taking them up towards the end of the session. Thank you so much for listening to me patiently. Over to Anilji to share the video recordings. Thank you so much. So let's start.
न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरो मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम। आपके शरीर में हड्डियों का, मांसपेशियों का और नसों का जो गठजोड़ होता है, दे एक्चुअली क्रिएट एवरी मूवमेंट इन योर बॉडी। आपके शरीर में वही मूवमेंट क्रिएट करना है। सो आई विल टेक वन एग्जांपल एंड लेट्स गो अहेड अंडरस्टैंडिंग व्हाई प्रॉब्लम हैपेंस एंड व्हाट इज द सॉल्यूशन। मैं एक एग्जांपल से शुरू करूंगा और उसको लेके हम समझेंगे। तो सपोज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? सबसे कॉमन प्रॉब्लम क्या है आज के समय? नी पेन। लेट्स टेक नी पेन एज एन एग्जांपल एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम बात क्या कर रहे हैं उसके बारे में नी पेन से स्टार्ट करते हैं, राइट? So some person who got an injury in one of the knees will get a knee problem in that leg, है कि नहीं? अगर एक नी इंजरी किसी का हो जाता है तो वो उस घुटने में उसको परेशानी होगी। और अ स्पोर्ट्स पर्सन who has somehow damaged one knee, एक अगर घुटने को किसी तरीके से एक स्पोर्ट्स के पर्सन ने, एक बंदे ने अगर डैमेज कर दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी। बट दैट इज लोकलाइज्ड प्रॉब्लम। डज एवरीबडी हैज डैमेज देयर नीज? क्या सभी ने अपना नी डैमेज कर दिया? नो। पीपल आर गेटिंग इनटू, स्टिल गेटिंग इनटू प्रॉब्लम। देन व्हेन यू गो टू द डॉक्टर विथ योर नी प्रॉब्लम, जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं अपने घुटने की प्रॉब्लम लेके, एंड द मोस्ट कॉमन थिंग दैट यू हियर इज डीजेनरेशन इन द जॉइंट। जो सबसे कॉमन चीज है, जो सबसे पहले डॉक्टर बोलता है, वो तो आपके घुटने घिस गए हैं, इजंट इट? Degeneration. So the next thing can be degeneration. यानी कि आपके नी घुटने में जो कार्टिलेज था वो बन नहीं रहा, वो घिस रहा है, वो प्रॉपरली बन नहीं रहा, उसको बनना भी चाहिए था, रीजनरेशन भी होना चाहिए। रीजनरेशन इज ऑल्सो a part of this human system, but regeneration is not happening properly. Degeneration is happening. दूसरा कारण हो गया, now some person goes to a doctor with a swollen knee, inflammation in the knee. लालीपना है उसके घुटने में, inflammation है, सूजन है। The doctor will still say there is a localized problem at the knee. वो कहेगा एक्सरे करा लो, वो कहेगा जाके स्कैन करा लो, सीटी स्कैन करा लो, एंड ही वुड ट्राई टू सी द प्रॉब्लम देयर इटसेल्फ। वहीं पे वो प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश करेगा और सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। But do you know why inflammation happen in your body? Why inflammation? Inflammation क्यों होता है? सूजन क्यों आ जाती है आपके जोड़ों पे? शायद आपका लिवर ठीक नहीं है। If your liver gets impacted, there will be inflammation in the body. If your digestion is not proper, there will be inflammation in the body. Third thing, if there is an increased uric acid in your body, your kidney is not functioning properly, then also there will be inflammation. So क्या इसका रीजन ढूंढा गया आपके लिए? Why this inflammation is happening? No. So even if you go for a liver test, liver will not show any sign of damage till it gets damaged to 95%. 95% जब तक लिवर का डैमेज नहीं होगा तब तक लिवर के टेस्ट में कुछ भी नहीं आने वाला। So your problem will remain undiagnosed. Usually these diagnoses are not done. तो इन्फ्लेमेशन क्यों है यहां पे आपके जॉइंट में? प्रॉब्लम क्यों? बिकॉज देयर इज अ लिवर प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ किडनी प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज एन इशू विथ डाइजेशन। नाउ रचना जी सेड आफ्टर मेनोपॉज osteoporosis, osteoarthritis is very common. Yes. What does it mean also? आपका घुटना का दर्द क्या रीजन क्या हो सकता है? हार्मोन इम्बैलेंस, isn't it? Another reason is hormone imbalance. हार्मोन इंबैलेंस होगा तब भी आपके घुटने में दर्द आएगा, कमर में दर्द आएगा, लोअर बैक पेन एंड योर नी पेन कैन हैपन। सो व्हाट आर यू डूइंग टू बैलेंस योर हार्मोन्स? देयर इज नो वे, कोई तरीका नहीं है। नाउ इफ द ऑस्टियोपोरोसिस हैज हैपेंड, हड्डियां अगर ब्रिटल हो गई, कमजोर हो गई हैं, पोरस हो गई हैं, बहुत जल्दी टूटने की आशंका रहती है इसके अंदर। इफ दे हैव बिकम ब्रिटल बाय कैल्शियम, हाउ मेनी पीपल हैव कम आउट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस by taking calcium? Not even a single example. एक भी example नहीं है। Rather, do you know if you take long-term calcium, the chances of
breast cancer will increase by 200%. So I'm just trying to tell you, don't see problem as a localized deficiency or disalignment or some kind of a breakdown at a localized position. The discrepancy at a localized position is not the only way to look at a problem. It can happen due to many reasons. So what we are talking about is there are 8 major factors, 8 कारण हैं because of which one problem happens, जिसकी वजह से एक problem आती है. So if you really want to come out of problem, then you will have to work upon these 8 factors. 8 कारणों पे काम करना पड़ेगा. This is Ashtaang Chikitsa. Now, in the last 50 years, पिछले 50 साल, 100 साल तक का आप ले जा सकते हैं. There is example for that. Nobody has come out of their issues. घुटने आज तक किसी के ठीक नहीं हुए ना. Nobody has come out of their knee problem. ज्यादा से ज्यादा to the extreme, what the doctor will say, do a knee replacement. अपने घुटने बदलवा लीजिए. So what does it mean? It cannot be treated. According to the modern treatment, it cannot be treated. ये ठीक हो ही नहीं सकता. So I would tell you to remember your grandfather, grandmother. अपने दादा दादी नाना नानी को याद करें सर. क्या उनको इतनी एज में प्रॉब्लम थी? Did they have problem at this age? No. So why deterioration or the problem was not happening at that time to this scale? इस scale में उस समय प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी. आज क्यों हो रही है? Because the system has gone weak and we are not doing anything on this human body to strengthen it. इसको मजबूत करने के लिए, strong करने के लिए हम कोई काम नहीं कर रहे. So let's start. Ashtaang Chikitsa. The first thing, when I'm talking about Sharira, the word Sharira means body and mind both. जब मैं आपको बोलूंगा शरीर, तो इसका मतलब body as well as mind. Because in कुंभक पद्धति, in कुंभक कलाचार और Ayurved kalachar, in yoga kalachar, there is nothing called as mind separately. It's always sharira. Both body and mind complex is called as sharira. मैं एक एग्जांपल दूं आपको. Let's take example. Open your mouth and try to think. अपना मुंह खोलिए और सोचने की कोशिश कीजिए. Open your mouth and try to think. Oh, it becomes difficult. 50 किताबें पढ़ लीजिए, दिमाग को रोकने का कोई तरीका नहीं मिलेगा. And just a little bit, if you know how it works, ये काम कैसे करता है, अगर ये आपको मालूम चल गया तो एकदम से पकड़ लेते हैं. You just catch it then and there. तो मुंह खोल के आप सोच नहीं पा रहे. So is your action and your mind different? Is your body and mind different? No, it is not different. ये अलग नहीं. So your body and mind complex constantly strives to live. ये आपका शरीर हमेशा एक जद्दोजहद में रहता है जिंदा रहने के. हाँ या ना? So there is something called as prakriti, new cellular formation. नए नए सेल्स और टिश्यूज आपके शरीर में बनते हैं. And there is another aspect called vikriti. Lot of cells which has aged, they die. बहुत सारे ऐसे सेल्स और टिश्यू जो आपके शरीर में काम नहीं कर पा रहे ठीक से, वो खत्म हो जाते हैं. After a certain time period, certain age, they wear off. This is wearing off is called as vikriti and production is called as prakriti. Right? ये दो चीज हमेशा चल रही है. There has to be a balance of these two things, manufacturing and release. ये दो चीजें हमेशा बैलेंस में होना चाहिए. Now, I'm giving you another example. We will take examples so that you understand what I'm saying. बहुत सारे example लेंगे समझने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं. ये these are things you know already, but you are not paying attention to your body. आप ये चीज जानते ही हैं मगर वहां पे ध्यान नहीं जा रहा आपका. So when there is a polluted area, you enter a polluted area. एक बहुत ही प्रदूषित जगह पे आप जाते हैं. If you watch your breath, अगर अपनी सांसों को जरा ध्यान दे सांसों पे, what happens more, inhalation or exhalation? जरा सोचिए, please think about it because your body is the primary responsibility.
क्या करते हैं आप? ज्यादा इनहेल करते हैं, ज्यादा एक्सहेल करते हैं? ज्यादा सांस लेते हैं, छोड़ते हैं? ज्यादा छोड़ते हैं आप, लेना नहीं चाहते हो। योर बॉडी डजंट वांट टू। अगर धुआं कहीं भरा है तो आप देखेंगे आपकी सांस रुक जाती है। यू डोंट टेक इन, यू ट्राई टू एक्सहेल मोर। इफ यू गेट टायर्ड, अगर आप थक जाते हैं, व्हाट इज टायर्डनेस? थकना क्या हुआ? लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन द बॉडी, इजंट इट? व्हाट do? You do long exhalation. Oof. This is what you do. You do long exhalation, less inhalation. Now, for holidays, if you go to a hill station, अगर holiday के लिए आप hill station में गए, what happens more, inhalation or exhalation? If you observe, you inhale more. जब भी आपके शरीर में सही सिचुएशन मिलती है, if there is a right situation, your body wants to manufacture more, it inhales more. When there is a bad situation, your body wants to throw out more. आपका शरीर चीजें बाहर निकालना चाहता है, more exhalation. So how is your environment, nearby environment? आपने आसपास के वातावरण का क्या हाल किया? आपने नहीं, मैं तो कहूंगा सभी ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट ह्यूमैनिटी, आई एम जस्ट सेइंग इट इन दैट वे। हमने क्या किया? वातावरण का खराब कर दिया। डू यू थिंक योर बॉडी वांट्स टू इनहेल मोर और एक्सहेल मोर? It wants to inhale less and exhale more. So is construction happening more or destruction happening more? Lot of destruction, no construction. So आपके घुटने घिसेंगे कि नहीं घिसेंगे? बन तो रहे नहीं, आपने सिचुएशन नहीं छोड़ी। What kind of food you are eating? भोजन कैसा करना चाह रहे हैं? Genetically modified food, isn't it? Your body doesn't want to take it. लेना नहीं चाहता, कभी कभी उल्टी कर देता है, बाहर निकाल देता है। Your body pukes it out also sometimes. वो बाहर निकालना चाहता है, it doesn't want to take in. So regeneration will happen more or degeneration will happen more? Degeneration will happen more and correlated with the situation. इसीलिए आपके joints घिस रहे हैं, उनमें दर्द आ रहा है। Regeneration नहीं हो रहा, नई चीजें नहीं बन रही, घिसे जा रहे हैं। So there is an imbalance of prakriti and vikriti. इसका बैलेंस होना चाहिए था, मगर ये बैलेंस नहीं हो पा रहा है। So ये दो का अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे, देयर इज नो चांस ऑफ रिकवरी। सो व्हाट आर यू डूइंग टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ दीज टू थिंग्स? यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। तो अपना ट्रीटमेंट करेंगे नहीं तो होगा कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, so this is the first thing that we need to get to, a balance of prakriti and vikriti, a balance of regeneration and degeneration, and there is a method to do it. इसका एक तरीका है करने का। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं, what do you do? Somebody is hitting you, कोई आपको मार रहा है, you feel damage ना, you think there will be a damage. What do you do? क्या करते हैं आप? सांस रोक के टाइट कर लेते हैं अपने आप को, you hold your breath and tense your body, isn't it? Yes or no? आप जानते हैं इस बात को, ऐसा नहीं है। Whatever I am saying, you know it already. तो आप सांस रोक के बचाते हैं ना। अगर हॉरर मूवी देख रहे हैं, if you are watching a horror movie, there are certain scenes that you don't want to watch. देखना नहीं चाहते ना, हाथ रख लेते हैं आंखों पे। एक बच्चे को देखो, see a kid, the kid will close the eyes. So you hold your senses also to protect yourself. अपने आप को बचाने के लिए अपनी दृष्टि को, कहीं पे खराब स्मेल आया तो आप रोक लेते हैं ना सांस, you hold your breath. If there is a bad sound, you close your ears. आप नहीं सुनना चाहते इसको, you hold your senses. So holding your breath, holding your senses is called as kumbhak. इसको नाम दे रहे हैं हम। So it is not just breath hold, it is the hold of senses also. आपकी पंच तन्मात्राएं जो है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, all the 5 senses, you hold the senses to protect yourself. So there is a way of creating more prakriti and balance out the vikriti. You can't stop vikriti. देखिए आप degeneration stop नहीं कर सकते. This is a natural process of life. You will age, but you must age gracefully. ठीक है? तो how to balance vikriti? There is a method to balance vikriti. Ashtaang Chikitsa will give you that method to enhance prakriti and balance the vikriti. So then next thing, when there is a regeneration, कोई नई चीज पैदा हो रही है,
So it will expand, isn't it? वो फैलेगा. एक शिशु इतना छोटा सा पैदा होता है. There is a little infant which gets born, and then the infant expands, isn't it? This expansion factor is called as samkhya. The real word for expansion is samkhya or proportionate expansion. This is called as proportionate expansion. सही तरीके से संतुलित विस्तार, इसको क्या कहेंगे? संतुलित विस्तार. Suppose your one hand becomes long, the other hand remains short. एक हाथ लंबा हो गया, एक हाथ छोटा रह गया. Will you get joint problem in one of the shoulders? आपको एक शोल्डर में joint problem आएगी ना? So if you have one leg a little longer than the other leg, एक पांव ज्यादा लंबा है, दूसरा पांव थोड़ा छोटा है, so you'll get knee pain in one leg. आपके एक पांव में knee pain होगा. You'll get hip pain at one side of the hip. If your body is not aligned, the right side and the left side is not aligned, you will get a problem. Neuro Musculoskeletal problem. अगर आपकी एक muscles खिंच गए because of uneven expansion, skin ढीली हो जाती है ना, skin becomes flabby when there is an uneven expansion. You get stretch marks, isn't it? You know what is stretch mark? You get stretch mark because there is an uneven expansion. असंतुलित विस्तार अगर होता है तो भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है. At muscles, at joints. आपकी मांसपेशियों में प्रॉब्लम आ सकती है, मांसपेशियां फट सकती है, आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है ना? वहां पे so disalignment. If you see at this point of time, most of the people do not even walk straight. The way we are sitting, the way we are living our life, we don't even sit straight. कितने लोग सीधा बैठते हैं? You always take a back rest, isn't it? So there is always, there will be, if you don't use your body proportionately, there will be disalignment. और आपकी joint problem disalignment की वजह से भी हो सकती है. There are three basic disalignment that happens in the body. तीन basic disalignment है. नाभि, your navel can get disaligned. We call it dharan. Your chest can get disaligned. आपकी छाती डिसलाइन हो सकती है. That part is called as kaudi. And your legs can get disaligned. आपके जांघें डिसलाइन हो सकती है. That is called as nale in the local terminology. Nabhi, kaudi, nale. Now, if your nabhi, if your navel get disaligned, you'll get into digestive issue, metabolic issue. आजकल diabetes बहुत हो रहा ना? आजकल diabetes बहुत हो रहा. Do you know one of the reason of diabetes is disalignment of the navel? But nobody is correcting it. If you have asthma or allergies, respiratory disease, corona is also a respiratory thing. People's respiratory capacity is going down because of the disalignment of kaudi or the chest factor, and the disalignment of the thighs or the legs will get you into hip problem, knee problem, ankle problem, sciatica, those kind of things. So what are you doing to balance it? आप क्या कर रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए? तो एक काम करें, let's see how do we balance. हम बैलेंस कैसे करते हैं देखें जरा. अपने दाएं हाथ को पकड़ लें, hold your right hand over the top and try to pull it. खींचने की कोशिश करें. Just pull on the left side. बाईं तरफ खींचने की कोशिश करें. When you pull, what do you do? ये जोर लगाने के लिए आप क्या करते हैं? You hold your breath. Yes or no? सांस रोकी आपने? Even if you have to align yourself, what is the basic key? वो कुंजी क्या है? वो चाबी क्या है? It is kumbhak. It is holding your breath. So if you use breath hold in a particular manner, you can align the whole body. That is what we teach in Ashtaang Chikitsa, how to align your body. And once your body is aligned, you will feel very light. आपको हल्का महसूस होगा. You lose excess of weight. जो भी आपके शरीर में बचाने के लिए शरीर ने कुछ भी किया है वो आपका ठीक हो जाएगा. So Sankhya Sharir, this is the second factor. Now again, if you have to align or Sankhya, if you have to correct the Sankhya, you have to use Kumbhak.
Now let's go to the third part, pramana. Now one more thing in Samkhya, what I want to actually tell you, that there is a way of doing a movement and holding the breath. अगर आपको तरीका पता है ना, how to align, how you want to align your navel, how you want to align, how you can align your chest, अगर ये तरीका पता है ना, then only you will be able to align. So it needs a little commitment. एक थोड़ा committed atmosphere चाहिए होता है उसके लिए. That is why we teach it in the class. हम क्लास में सिखाते हैं. Now the fourth aspect, प्रमाण शरीर, प्रकृति, विकृति, संख्या, प्रमाण. चौथे पे आ गए हम, प्रमाण. प्रमाण means density. इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी. इसी को धातु भी कहते हैं. वी कॉल इट धातु. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं. लाइक बोन इज वेरी मच डेंस. हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है. योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन. आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें. और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, your fat muscle, your fat tissue or adipose tissue is very light compared to the muscles and bones. जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है. People who have denser bones and muscles, their weight is high even though they are lean. वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है. So there are different kinds of tissues. This is called as सप्त धातु. 7 different density tissue की है आपके शरीर में. There are 7 different densities, tissue of different densities. रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. These are 7 densities. ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं. If the densities becomes less, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी organs हैं, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए देयर इज अ डेंसिटी रिक्वायर्ड. सो वी आर लूजिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ आवर ऑर्गन. हमारी ऑर्गन वीक हो रही है. व्हाट इज डायबिटीज? योर पैनक्रियास इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, योर लिवर इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. व्हाट इज हाइपोथायराइड? योर थायराइड ग्लैंड इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, है ना? इट हैज आल्सो रिलेशन विथ लिवर. व्हाट इज किडनी डिजीज? योर किडनी इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. ऑर्गन डैमेज आजकल ज्यादा है. यू विल सी मोर क्रॉनिक डिजीज आर देयर, है ना? ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज. सो हाउ डू यू करेक्ट योर ऑर्गन? सपोज देयर इज अ जॉइंट पेन ड्यू टू लिवर डिसफंक्शन. लिवर के कारण आपके शरीर में जॉइंट पेन है, इन्फ्लेमेशन. सो यू विल हैव टू करेक्ट द लिवर. आपको लिवर ठीक करना पड़ेगा. इज देयर अ मेडिसिन टू करेक्ट लिवर? नो, देयर इज नो मेडिसिन टू रिजुवेनेट योर ऑर्गन. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को. देयर इज नो मेडिसिन. देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन. दवाई हो ही नहीं सकती है. सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली. आपको अंदर काम करना पड़ेगा. अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं. यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? But people into sports and weight training and exercise, they also get diabetes, they also get heart attack. 40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है. एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन. एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला. सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें. नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस. अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से. Make a fist from the right hand. Keep your left palm like this and try to push your left palm very hard. जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को. पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए. How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा. Again, do it. Do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते हैं आप. बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? Here, यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना. यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. बाय होल्डिंग योर ब्रेथ यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट. सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, so how do you lift weight? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं?
You hold your breath. You can't lift weight without holding your breath. You hold your breath, and when you lift weight with the right hand, suppose कीजिए आप दाएं हाथ से weight उठा रहे हैं, the trigger goes to the right hand muscles. दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है, and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना. This is how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar. You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? Internally, your heart rate will increase. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. You start sweating after some time. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtaang Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you, for youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong. Now let's come to the other part, which is marma. Your organ, muscles, bones, they all work together, isn't it? आपका heart, आपके muscles, your nervous system, muscles, bones, they all work together. If you take out heart, you will not be able to move. You will not be able to live. If you take out liver, you will not be able to live. So they all work together. So there are junctions. ऐसी जगह है जहां पे की मूवमेंट होती है. There are junctions. Muscle and nerve junction. Muscle and bone junction. Two bones and there is a junction. ऐसा ही है ना? दो हड्डियों के बीच में एक जोड़ है. Organ, आपकी आंतों के बीच में. Lungs, organs and the external body is connected. ये सब जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं जुड़ी हुई. ये जो junction point है, this junction point of the various organs is called as marma. If this junction point is okay, lubricated and flexible, you can perform better. अगर ये junction point ठीक से काम कर रहे हैं, ठीक से movement कर रहे हैं, तो आपका शारीरिक movement ठीक से होगा. Your organ function will happen properly. So these are called marmas. So marma needs a constant rejuvenation. इनको constantly एक तरीके से movement देना पड़ता है. To keep it fine, we need to actually make them move in a particular way constantly. For example, I'm giving you another example. If your marmas are not functioning properly, there are two kinds of circulatory movement in your body. आपके शरीर में दो तरीके का movement का, blood circulation and lymph circulation. ऐसे मान के चलिए, just think about it. There are tissues and cells. आपकी कोशिकाएं हैं. The waste product gets thrown out of their walls. वो अपने बाहर अपना waste छोड़ देते हैं. And by movement of tissues and cells, these waste product comes to a certain place called joints or lymph node. अंग्रेजी में उनको lymph node कहते हैं. All your joints are lymph node. आप ऐसे कटकाते हैं तो आवाज आती है ना? If you
if you just tense the joints, there will be a sound. टक से आवाज आएगी ना. क्या हुआ? Gases release हुई. There is a release of gases and toxins. So it only happens through movement. वो बिना movement के नहीं होगा. Blood circulation can happen without movement because there is a pumping organ. एक हार्ट है जो ब्लड सर्कुलेशन करवा रहा है, लिम्फ का कोई सर्कुलेशन नहीं करवा रहा. इट विल ओनली हैपन बाय मूवमेंट ऑफ द बॉडी. सो इफ यू मूव द बॉडी इन अ पर्टिकुलर वे, दीस टॉक्सिन्स दे गो आउट ऑफ द बॉडी. देयर इज अ कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ सेल्स. इंटरनल एनवायरनमेंट साफ बनेगा आपका, तभी देयर विल बी प्रकृति, न्यू सेल्यूलर फॉर्म, बेटर सेल्यूलर फॉर्मेशन. अगर वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होगा तो रॉन्ग सेल्यूलर फॉर्मेशन कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड एज कैंसर. गलत सेल बनते हैं तो कैंसर कहते हैं ना उसी को. सो बिकॉज ऑफ एन इंटरनल एनवायरनमेंट, कैंसर हैपेंस बिकॉज ऑफ अ कैंसरस एनवायरनमेंट. और उसके लिए इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, देन देयर शुड बी कांस्टेंट रिजुवनेशन ऑफ मर्म. तो इसमें हम मर्म, अष्टांग चिकित्सा में देयर इज अ पार्ट इन अष्टांग चिकित्सा, देयर इज अ पार्ट कॉल्ड एज अंगन्यासा एंड मर्म विन्यासा, which actually works upon, there is a particular movement in a particular way with a particular kind of breathing. It's a part of Ashtaang Chikitsa. Now go a little further. Now everything is ready for functioning. Now tissues, organ, joint, marma, सब कुछ तैयार हो गया. Now you function, you live your life, you do movement, you do function. काम होता है ना. So function, there are three things which are attached to function. तीन चीजें हैं function के साथ में जुड़ी: material, energy and movement. Function means three things: material, energy and dynamism. इसी को कहते हैं कफ, पित्त, वात. This you must have heard of. आजकल तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी चलती है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, फेसबुक यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटी. So everybody is educated. You know, at least you must have heard of these words called vata, pitta, kapha. Most of the people do not know what it is. They try to make an idea. But material, energy and dynamism, kapha, pitta, vata. Most of the problem is attributed to dynamism. वात दोष ज्यादातर प्रॉब्लम के साथ में जुड़ा हुआ है. So what is your joint problem? What is it called as? वात दोष. Right? मूवमेंट को आप कंट्रोल कैसे करते हैं? व्हाट इज वाता? मूवमेंट. वाता ऑल्सो क्रिएट्स पेन. सो मूवमेंट, हाउ डू यू कंट्रोल मूवमेंट? इफ यू वांट टू मूव योर हैंड, हाउ डू यू कंट्रोल द मूवमेंट? अगर आप ऐसे ऐसे तेजी से हाथ हिलाए, देखिए पीछे, अपने पीछे देखिए, हाउ डू यू कंट्रोल दिस मूवमेंट? बाय होल्डिंग योर ब्रेथ इन अ पर्टिकुलर मैनर. अपनी सांसों को एक तरीके से चलाते हैं इसके लिए. यस और नो? You control your movement by holding your breath. Without holding your breath, you cannot control your movement. So, Vata dosh से बाहर आना है तो क्या करना पड़ेगा? If you want to come out of Vata dosh, what you need to do is control your movement. कुंभक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? There is no other way. If you apply joint pain relief sprays or some gel, उससे क्या होगा? Temporary, you will get a joint pain relief. Temporary, it's little temporary. क्या आपका घुटना ठीक हो जाएगा? No, it will not happen. So if you want to really have a control over the movement of your body, over your life, then you must practice kumbhak. कोई और चारा है नहीं. So दोष शरीर को, if you want to correct the dosha imbalances in your body, the most potent way is kumbhak. Other ways are also available, but they are less potent. There are medicines, all the herbs, Ayurvedic herbs, they do Vata, Pitta, Kapha balance, but to a certain extent. केवल एक extent तक ही कर सकते हैं. They can be a little help, but they cannot be cure, rejuvenation. If you do kumbhak for 3 years, you will become 10 years younger. This is called as rejuvenation. So, neuro problem, usually कहते हैं neuro problem. Somebody was talking about so
what people were talking about, spondylitis and what else? Neuro problem. Now, something called as drop foot, neuropathy, है ना? ये चीज आपने सुना होगा. You must have heard of these things. So neuropathy happens on, you don't have a control. Parkinson, again a neuro problem. Huh? There is degenerative disease, which the doctor will say it doesn't become fine. It doesn't. No, there is no solution for that. There are sometimes autoimmune disorder of nervous origin, for which there is no solution. कोई solution है ही नहीं. So I'll tell you some examples. मैं आपको कुछ example बताता हूँ. So there was a person who was suffering from paralysis. एक 64-65-year-old professor of Delhi University or some associate Delhi University का कोई college है उसमें. So he suffered a paralytic stroke and lost sensation in one part of the body. He started doing kumbhak. In 3 months' time, he regained the sensation by almost 95% on that part. Now another example. There is a marathon runner. She's a lady marathon runner. She started developing drop foot, uncontrolled legs. She couldn't control her legs. Suddenly, uska marathon सब बंद हो गया. She was almost like stuck at one place. She started doing kumbhak. And after 4 to 5 months, she reported, I am preparing for next marathon. So there was a person who was suffering from myasthenia gravis, where the muscles are not in control. आंखें पड़कती रहती हैं, muscles हिलते रहते हैं. They are in always fluctuating mode. He started kumbhak, and in 3 months' time, he reported that it's gone maximum, like it's gone about 80 to 85% it's gone. Another person who was not able to speak for more than 2-3 words, he was not able to speak. Uska voice box related issue tha. It is also a neuro origin. So he started kumbhak. In 4 to 5 months time, he said, I can talk for long now. मैं काफी समय तक अब बोल सकता हूं जो पहले नहीं बोल सकता था. So these are examples of people who have done kumbhak and they have come out of the problem of neuro origin. I'm talking about problems you're talking like Parkinson, paralysis, and neuropathy. You can actually revive. Your whole nervous system can revive. Let's get to the second last part, or the 7th Sharira. It is called as Garbha Sharira. Garbha means a quality. The Sanskrit word Garbha means a quality of environment, an environmental quality. So Garbha fundamentally is called as quality, and the quality can be created by something called as samskara. Samskara is a way of creating quality. So Garbha means quality. Garbha, quality or genetics are correlated. I'm talking genetics. When you say Garbha Sharira, it is your genetics. Your genetics is responsible for your personality, for the quality of your body. How much your body has potential in what direction, in what vertical. It is your genetics. Isn't it? This is called as Garbha Sharira. The Garbha Sharira gives you the genetics. Can you correct your genetics? It has also some relation with what you call as karma. When we say samskara, it is called as related to what you have done. So your genetics is also what you have done. Your genetics is also what you have done. So can you correct your genetics? Yes, 99% of your genetics can be changed. Now, the modern research says 99% of the total genetical quality is epigenetics, changeable genetics, variable genetics. You can actually change your genetics. So earlier theory of genetics cannot be changed is now been busted. So now you can change your genetics also.
If the doctor says, oh, you have a problem because of your genetics, then tell the doctor, please change my genetics, because modern research says genetics can be changed. But they are thinking of stem cells, which is not the right way to approach genetics. I'm telling you, Kumbhak is a way to change genetics. When you do Kumbhak, you are actually applying epigenetic triggers inside the body, which will change your genetics. And that's why people into diabetes, they drop their medicine. People of who have blood pressure issues, they don't need a medicine to control their blood pressure. Whatever genetics you say or what is being said in the world today can be changed. But you have to do certain things in a certain way. Only then it will happen. The last part is Shrishti Sharira. Eighth Sharira is Shrishti Sharira. Shrishti means what? In which you are sunk. Like Shrishti for a fish is the sea. एक मछली के लिए समुद्र सृष्टि है. So the water around her is सृष्टि for her. So for human being, the cosmos, ये ब्रह्मांड is सृष्टि. So it applies lot of forces. Na? What is environment? What is universe? Lot of forces acting. Na? You walk on earth in the force which is called as gravity. Gravity pulls you down constantly. Within this gravity, you walk. So you make an effort against gravity and then you walk. There is a very high environment or the pressure of this atmosphere. Atmosphere का pressure है ना आपके ऊपर. उसके बावजूद भी आप move करते हैं, चलते हैं, सब कुछ करते हैं. You do everything. So this is Srishti. The forces of environment is Srishti. Now I am bringing up something very, very unique and important. Now suppose gravity pulls you down. You know this, gravity pulls you down. Why do you grow tall? Gravity तो आपको नीचे खींचता है ना, गुरुत्वाकर्षण आपको नीचे खींचता है. आप लंबे क्यों हो जाते हैं? एक पेड़ ऊपर क्यों उग जाता है? Why a tree grows up? Why a bird flies? Because you must be applying a force opposite to gravity. Yes or no? आप जोर लगा रहे होंगे gravity के विरुद्ध. आप जानते भी नहीं हैं. You don't even know, notice. But you are applying a force opposite to gravity. Suppose कीजिए आपके अंदर this force becomes weak inside you. Gravity के opposite force लगाना कमजोर हो गया. आपको कैसा फील होगा? How will you feel in your body and mind? You will feel heavy, pulled by gravity. आप उठा नहीं पाएंगे ना, हल्का महसूस नहीं कर पाएंगे. Will not feel light. How will you feel? Heavy. ऊपर नहीं उठा पाएंगे तो नीचे heavy feel करेंगे. Where will the heaviness impact? ये heaviness कहां असर करेगा आपके? Joint पे? It will impact the joint? Yes or no? This heaviness is called as stress. S-T-R-E-S-S. You talk about stress, but आपको मालूम नहीं है stress क्या है. You think situation creates stress. No. Put 10 people in the same situation. 5 will get stressed, 5 will not. It is not the situation. It is your inability to handle a situation creates stress. आपकी क्षमता नहीं है अगर किसी सिचुएशन को हैंडल करने की, तब आपको उसमें स्ट्रेस होगा. So are you doing anything to increase your capability and the capacity to handle situation? No, you are not doing it. So I talked about one force. एक फोर्स के बारे में बात किया. The upward force is called उदाना. In कुंभक कलाचार, in कुंभक विज्ञान, we call it उदाना. इसको हम उदान कहते हैं. Have you heard of this word उड़ान? उड़ान सुना है नाम आपने? उड़ना, उड़ान. This has come from the root udana. That means opposite to gravity force. There are 84 forces which you are struggling every moment through. 84 अलग-अलग forces में आप काम करते हैं. Your organs function according to these forces. So which force has gone weak in you because of which you have got into one problem? आपके अंदर कौन सा force weak हो गया जिसकी वजह से आप problem में आ गए? That is what we diagnose in प्राण शक्ति diagnosis. यही प्राण शक्ति diagnosis है. We find out the force which has become weak in you, and because of that you have got into one problem and then another and then another and then another. This is the root cause. So we do prana shakti diagnosis, and in the 9 weeks you learn the basic module, and you get an extra class where the whole module get customized according to your system. 9 हफ्ते तक आप एक मॉड्यूल सीखते हैं
There are 3 things in that module which actually takes care of all these 8 aspects. ये 8 चीजों का वो ध्यान रखता है. 3 चीजें हैं. The first one is called as Anganyasa. The second one is called as Hatha Vinyasa. The third one is called as Kumbhak therapy. So in 9 weeks, you learn this module of 3 steps, and then you get an extra class of customization where we diagnose you and customize the whole module according to your system and problem. This is Ashtaang Chikitsa. So it takes care of all the Sharira. Sharira means body and mind complex. Prakriti, Vikriti, Sankhya, Pramana, Marma, Dosha, Garbha, Srishti. And it's a cycle. It's a cycle. So if you work upon the body, see, you will never get a magic pill. If you wait for eternity, you'll not get a magic pill. कोई magic दवाई नहीं बन सकती शरीर के लिए. Why? Because this body is first of all not designed for chemical medicine. Is your body designed for chemical medicine? No, your body is not designed for chemical medicine. जब आप एक पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो डीजल डालते हैं उसमें. Would you put diesel into a petrol vehicle? No, never. Common sense, it is designed for petrol. So when your body is not designed for chemical medicine, where does this common sense go? ये common sense कहां चला जाता है इस समय जब हम अपने शरीर को इस्तेमाल करते हैं? That is why more medicine, more disease in the last 50 years. Enough example, isn't it? So you must work upon this. Body is magical. Let me give you this guarantee. ये शरीर बहुत magical है. ये ठीक करता है अपने आप को. This is the only gadget which is self-corrective or it corrects itself. ये खुद को ठीक करता है. आप मौका दें इसको. You empower your system and you'll see magic happening in your life. So it is important wherever you invest your time, money, focus, that thing grows. आपने दवाइयों पे इन्वेस्ट किया पिछले 50 सालों में, कितनी बढ़ गई? वो आपको रूल करने लग गए. आप हेल्थ पे इन्वेस्ट कीजिए. Just invest in health and you'll see your health will improve. Not only your health, the health of next generation will improve. So it is our responsibility that we focus on this beautiful system that we have been given or gifted with and transform our lives, make our lives better. So I'll stop here. यहाँ पे मैं रुकूंगा. हाँ? So the team will take you forward. Team आपको आगे बताएंगे. Thank you so much for listening to Swamiji patiently. Now I would like to invite Asha ji, a current participant, to just share her journey of Ashtaang Chikitsa. Asha ji, can you hear me? Okay. Asha ji, can you hear me? Asha ma'am, please unmute yourself. Yes, can you talk about your journey in Ashtaang Chikitsa, please? Oh, okay. I started my course on the 2nd of May, like everybody in this group. And I like this course because I'm finding that I'm improving every week. I have been doing all the kriyas and kumbhaks that we have been taught every week. Every day I do them without fail. And I feel that my muscle strength has improved quite a lot. I can hold my breath for longer periods now.
my inhalation and exhalation are also, I'm able to count up to 16 or 20 sometimes. And also I feel my physical strength has improved. Like I go for walks after my kriyas, and I feel that I'm more energetic than before. So I'm planning to continue this whole course, and I mean, whatever you're going to teach us in the next week or till the 2nd of July when this course is completed. I want to make it a daily routine because I'm benefiting from it. I don't have any serious health problems. Like I have hypertension, which is very well controlled. And my cholesterol levels were also high. I'm waiting to finish this course to check my blood and see whether, because I'm not taking any medication for high cholesterol. After I started this course, I want to see if I have benefited, what my cholesterol levels will look like when at the end of the course. I'll be happy if I don't have to take any medication. I am on medication for high blood pressure and cholesterol. So if I can continue my kriyas and kumbhaks regularly and not have to take any medication for these two problems, I'll be very happy. I think this is a good course. Everyone who cares about their health and well-being should take this course. That's all what I wanted to say. Thank you so Thank much, you. Asha ma'am, for joining us in the webinar. Now the much awaited program details I will be sharing. Just give me 2 minutes. So let's know about the Ashtaang Chikitsa online program details now. Okay. बहुत लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि अष्टांग चिकित्सा ऑनलाइन प्रोग्राम में आखिर क्या क्या होता है, कितने दिन की प्रोग्राम है, and what are the charges? Yes or no? Give me a thumbs up. Okay. So it's a guided program conducted online by trained कुंभक mentors. ये एक guided program है, हम लोग hand hold करते हैं. Can somebody please stop scribbling? So it's a guided program conducted online by trained कुंभक mentors. Okay? तो कुंभक as in yoga सब लोग जानते हैं. बट यहाँ पर जो हम लोग थेरेपेटिकली करते हैं वो फोकस्ड कुंभक होता है, जो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को जो आपका वीक है उसके लिए करवाया जाता है. सो दिस द ट्रेनर हैज टू बी ट्रेन्ड टू डिलीवर टू द पार्टिसिपेंट्स, राइट. तो वो हम सिर्फ ट्रेन्ड कुंभक मेंटर्स को लेते हैं, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ट्रेन करता है लोगों को, स्वामी जी ट्रेन करते हैं और वही मेंटर्स आपको सिखाते हैं. सो प्रोग्राम मॉड्यूल्स M1, M2, M3. ड्यूरेशन होता है 21 डेज, 21 डेज, 21 डेज. मॉड्यूल 1 वात मॉड्यूल 21 डेज, मॉड्यूल 2 पित्त मॉड्यूल 21 डेज, M3 is the kapha module for 21 days. So it's basically 9 plus 1 is equal to 10 weeks. Okay? तो 3 वीक का होता है वात पित्त कफ मॉड्यूल. तो 9 वीक्स हो गया. एक वीक कस्टमाइजेशन का 10 वीक हो गया. उसमें हम आपको क्या देते हैं? 2 लाइव क्लासेस पर वीक, 1 लर्निंग क्लास, 1 is the mentors क्लास. मतलब आप लोग जो मेन क्लास में सीख रहे हैं, मेंटर्स आपको हैंड होल्ड करते हैं. आपकी जहां गलती हो रही है या नहीं समझ में आ रहा है
या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जहां पर क्योंकि आपके बीमारी के कारण कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, तो हर चीज को बारीकी से समझाया जाता है. So you will also get access to videos and written instructions. You do not have to worry if you have missed a live session. आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वीडियोस और रिटन इंस्ट्रक्शन देना हमारा काम है. हम सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्रियाएं बराबर से करोगे. So what is the next step? Very exciting. What is the next step? Pay the program fee, webinar special price. Who does not like the special price, the discounted price? Fill the PO form, login credentials for course access, start your classes with M1, then M2 and M3. So M1 में जैसा कि मैंने बताया 6 classes, 3 learning, 3 mentoring, 21 days. मॉड्यूल 2 में है 6 क्लास, 3 लर्निंग, 3 मेंटरिंग, अगेन 21 डेज. मॉड्यूल 3 में फिर 6 क्लासेस, 3 लर्निंग, 3 मेंटरिंग, 21 क्लासेस. तो टोटल क्लासेस कितने हो गए? 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 18 लर्निंग क्लासेस और एक आपका कस्टमाइजेशन. दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. आपका पर्सनल कस्टमाइजेशन जो स्वामी जी और सिर्फ स्वामी जी करते हैं, आपके हिसाब से कुंभक कस्टमाइज किया जाता है. सो आपका टोटल एंगेजमेंट क्या हुआ? 10 वीक्स. वैसे तो आप कुंभक से जुड़ गए तो आपका लाइफ लॉन्ग एंगेजमेंट हो गया, बट हमारे साथ आपका लर्निंग पीरियड हुआ 10 वीक्स. सो क्लास स्टार्ट डेट फॉर द 85th बैच. कौन सा बैच है ये? 85th बैच हम लोग शुरू करने वाले हैं. उसका मॉड्यूल 1 का डेट है 28 जून. जैसे ही आपने 3 वीक्स कंप्लीट किया, 12 जुलाई को आपका पित्त शुरू होता है. कफ शुरू होता है 3 अगस्त को. सो अल्टीमेटली यू विल बी कंप्लीटिंग ऑल द 3 मॉड्यूल्स one by one. So for module 1, mentor classes are on Thursdays. Module 2, mentor classes are on Fridays. Module 3, mentor classes are on Saturdays. So what is the class experience like? Online session, सबको लगता है कैसा होगा हमारा class experience? It's going to be live session. Mentors watch participants. Written instruction, English and Hindi. और आपको सेशन रिकॉर्डिंग्स भी मिलता है जो आप अपने सहूलियत के हिसाब से देख सकते हो. So what are the extras? Mental practices, unique diet perspective. हम डाइट आपको नहीं करने बोलते, हम सिर्फ आपको पर्सपेक्टिव बताते हैं कि इस तरह से आप अपना दिनचर्या या जीवन शैली चलाएं और खान पान में कैसे आपको ध्यान रखना. Simple detox processes, knowledge like no other. So yearly expenses, let's see how much we spend. Doctor's fees लगभग 6,000 to 12,000 हो जाता है. Physiotherapy 12,000 to 30,000 because it is neuromuscular problems. Medicines में 15,000 से 30,000. Of course, this varies. Total of 33,000 to 72,000 per year. कुछ ज्यादा नहीं है. और साइड इफेक्ट के जो कॉस्ट है उसका तो हम हिसाब लगाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक मेंटल कॉस्ट भी हो जाता है जो साइड इफेक्ट्स हम पालते हैं आफ्टर हैविंग दीज ट्रीटमेंट्स. So before I share the program details, it's very important to know who this program is not for. Again, I'm coming to the fact that who this program is not for. किन लोगों के लिए ये प्रोग्राम बना ही नहीं है. अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसा बात है कि बना ही नहीं है. हम आपको बताते हैं. It's not for people who are looking for a magic pill. हमारे पास तो कोई मैजिक पिल है नहीं कि हमने झंडा घुमाया और आपका तबीयत ठीक हो गया. ऐसा तो नहीं होगा. और आपको कल ही रिजल्ट चाहिए, हम नहीं दे सकते. We will move at it very, very slowly, patiently, and reach our goal, which is going to be long lasting. So how many people are willing to come for this result, a long lasting result? Give me a thumbs up. कितने लोग long lasting result चाहते हैं और कोई भी magic pill नहीं चाहिए?
लगता है यहाँ सबको मैजिक पिल चाहिए. Is it true? I'm not getting any thumbs up. Okay. So few people have raised their hands. So who this program is not for? This is not for those who are not ready to work on their body. जिन लोगों को अपने ऊपर काम नहीं करना है, उन लोगों के लिए अष्टांग चिकित्सा नहीं है. ओके? क्योंकि आपको खुद को कन्विंस करना पड़ेगा, खुद को आपको सही करना है, उसके लिए दृढ़ निश्चय आपको लेना पड़ेगा. हम लोग सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं. Who this program is not for, again, it's not for those who cannot invest 60-72 minutes every day on themselves. अगर आप अपने से प्यार करते हैं तो 60-70 minutes आपको देना ही पड़ेगा खुद के ऊपर, तब आपका शरीर बाउंस बैक करेगा, उसके पहले नहीं. This is not for those who are impatient. जिसमें impatience है उसके लिए ये नहीं बना. It's not for those who are looking for a free treatment or just some tips, क्योंकि वो tips से तो आपका कोई फायदा नहीं होना. So what all do you get? प्राण शक्ति diagnosis, जैसा कि मैंने बताया, for your root cause determination, कि अगर आपको information है और आपके friend को भी information है, कोई जरूरी नहीं है कि दो जन को same problem के लिए information है. It could be due to liver malfunction, it could be due to digestive issues. बहुत कारण हो सकते हैं. तो हमारे स्वामी जी रूट कॉज में जाते हैं और फिर डायग्नोसिस करते हैं कि इन्फ्लेमेशन किस लिए है. So weekly one main class of 60 to 90 minutes. Weekly one practice class of 60 to 90 minutes. ऑनलाइन कोर्स एक्सेस फॉर 6 months, 6 महीने तक आपको कोर्स एक्सेस मिलता है. वीडियोस ऑफ ऑल क्रियास डन इन द क्लास, रिटन इंस्ट्रक्शंस, प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप टू आस्क डाउट्स, क्वेश्चंस 6 days a week, इंडिविजुअल प्रैक्टिस, पार्टिसिपेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग, फीडबैक, थेरेपी कस्टमाइजेशन फॉर ईच पार्टिसिपेंट इन द 10th week, extended support of 30 days after the program is over. आपका 10 weeks program जैसे ही खत्म होता है, आपको चिंता नहीं करना है, 1 महीने का सपोर्ट हम लोग फिर भी आपको देते हैं. So what all you get? Inner gist, प्राण शक्ति diagnosis, weekly one main class, one practice class of 60 to 90 minutes, online course access for 6 months, course dashboard, videos of all kriyas done in class, course dashboard, written instructions, private WhatsApp group to ask doubts, queries for 7 days, individual participant progress tracking, feedback. हम आपका हाथ नहीं छोड़ते हैं, हम आपका डेली प्रोग्रेस भी ट्रैक करते हैं. Therapy customization for each participant in the program, extended support for 30 days after the program is over. So program fee for Ashtaang Chikitsa 9,500. कुछ ज्यादा लग रहा है क्या? किन लोगों को ज्यादा लग रहा है? अपना हाथ उठाएं please. Raise your hands if you think it's a little more. Quick, let me see how many people are feeling it's a little more. Only 5 participants have raised their hand. Okay. So slowly, participants. Okay, 7. Only 7. ओके, ठीक है. और कुछ लोग शर्म के मारे शायद नहीं बोल रहे, उनके लिए भी एक स्पेशल ऑफर है. सो एवरीबडी रेडी टू नो द स्पेशल सरप्राइज? एंड हियर वी आर, द स्पेशल वेबिनार प्राइसिंग. 9,500 ज्यादा है, so 5,500 the highly subsidized fee, valid till 18 June. 12:30 p.m. 10 weeks program, 19 classes, only 290 per class. Press all the 10 benefits. Now is it exciting? 9,500 का आपको 5,500 में मिल रहा है, and it is valid only till 18 June 12:30 p.m.
So how to enroll? The most important part of it. Pay the program fee, post the payment receipt in WhatsApp group, fill the participant onboarding form, join the first module, start attending classes to learn Ashtaang Chikitsa. Payment methods, आपको पेमेंट लिंक ये सब कुछ आपको वेबिनार ग्रुप में भी दिया जाएगा, अभी चैट बॉक्स में भी हमारे टीम मेंबर्स शेयर करेंगे, बैंक अकाउंट डिटेल्स भी है. So let's not wait for somebody to come and heal you. Let's heal ourselves. Take charge of your neuromuscular health before it is too late. So our super team, Rachna Shimal Botra, that's me, Ranjana Swain, one of our esteemed mentors, Sukesh Raj, he is another mentor, Shalini Bhagwat, who coordinates the class, Pooja Chopra, another mentor, Neha Upadhyay, our enrollment expert, Anil Chauhan, our program director, and Himanshu Reddy, our technical expert. So you can understand there is one big team which is working behind 1,000+ participants so that we can take you out of your disease and help you at every nook and corner wherever you're getting stuck. Okay. So I've shared the program details. I hope everybody's been able to understand. Even if you've not been able to understand, don't worry. We are going to write it in the chat box and share it in the class group as well. Thank you so much. I will be taking up the questions, a few of the questions now. Swami ji has not been able to join in due to some emergencies. So apologies from the entire Avisa team on his behalf as he could not join in. We'll take up a few questions, and the rest of the questions which we are not able to take up, it will be taken up with Swami ji and you'll be answered in the class group. Yes, Sonal ma'am, it's for all. I told 5,500 fees is for the entire program, if that's what you mean. Sonal ma'am, can we pay on Monday? We have limited seats, so it's better you pay at the earliest. Mangal sir, will this cost for all the 3 modules? Yes, it is going to cost for all the 3 modules. Okay. Shashikala ma'am, you can ask your question. Sonal ma'am, you can check your net connection, please. Shashikala ma'am, ask your question. Please unmute yourself. नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर ने बोला है और हाइपोथायरॉइड है मुझे, तो इसके लिए बहुत प्रॉब्लम है. हाँ, और नी रिप्लेसमेंट में जो मेरा 4th स्टेज पर है ऐसा बताया है डॉक्टर ने. ओके, तो आपका जो नी रिप्लेसमेंट है आप अष्टांग चिकित्सा कर सकते हो. उसके लिए उससे क्या होगा, आपका जो डीजेनरेशन और रीजेनरेशन फैक्टर में जो गैप आ गया, जो इम्बैलेंसेस आ गया है, वो हम लोग भरते हैं अष्टांग चिकित्सा से. आपके जो सिम्टम्स है, पेन है, स्टिफनेस है, वो भी आपका अष्टांग चिकित्सा के थ्रू ठीक होगा. और एज फार एज योर थायराइड इज कंसर्न, हमारा सिस्टर कंसर्न थायराइड का प्रोग्राम रन करता है. आपको उसके लिए सेपरेटली एनरोल करना पड़ेगा. पर कभी अष्टांग, हाँ, उसका अलग प्रोग्राम है. हमारा मेन फोकस न्यूरोमस्कुलर है, बट कई लोग आपकी तरह उनको थायराइड भी होता है, तो ऐसा हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि उनको एज अ बाय प्रोडक्ट थायराइड भी उनका कभी कभी नॉर्मल आ जाता है अष्टांग चिकित्सा से भी. बट ये हमारा मेन प्रोग्राम नहीं है, तो हमारा फोकस थायराइड की तरफ नहीं होता है. तो जो आप एक थेरापी बताते हो उसमें ये नी रिप्लेसमेंट के लिए भी है, नी के लिए ही है? नहीं, हम लोग यहाँ पर आपको
सिर्फ आपका जो नी रिप्लेसमेंट डिले हो जाए या नहीं करना पड़े, उसके लिए हम लोग आपको तरीका बताएंगे. ओके. Yes, Meera ma'am, please unmute yourself. क्या? Meera ma'am, Sonal ma'am, we do not have any physical center. Our registered office is located in Pune. Anil Kumar sir, can you please unmute and ask your question? Meera Bhalla ma'am, please unmute and ask your question. Yes, Anil Kumar sir. How we come to know what is the problem? Hello. Good evening. Yes, Anil Kumar sir. I'll take up Meera ma'am's question after this. Yes. Hello. मेरे दोनों Yes हाथ sir, में I वीक. can hear you. Yes. मेरे दोनों हाथ में वीकनेस है और क्या है? हाथ वीकनेस बढ़ती जा रही है दोनों हैंड में, राइट एंड लेफ्ट दोनों हैंड में. थिकनेस बढ़ती जा रही है. वीकनेस अच्छा, कमजोरी वीकनेस, सॉरी, हाँ बढ़ रही वीकनेस. है. और MRI कराया था तो एम्स वगैरह में दिखलाया था तो उन्होंने C3 C4 सर्वाइकल का जो है वहां पर कोई नर्व दबने की बात बता रहे हैं. कह रहे हैं कि वो MND नहीं है आपका. डॉक्टर्स ने बोला कि MND नहीं है और कोई भी ऑब्जेक्ट छोटी छोटी चीज पकड़ने में दिक्कत होती है. ये ग्रिपिंग हमारी बिल्कुल वीक हो चुकी है. ये हाथ से कौर बना के नहीं खा सकते हैं, चम्मच से ही खा पा रहा हूँ. दिस इज द प्रॉब्लम. अच्छा, तो ये आपका देखिए जो प्रॉब्लम है, जो नस दबने की, नर्व पिंचिंग का, वो आपका जब हम आपको मूवमेंट्स करवाएंगे, आपको कुंभक थेरेपी करवाएंगे, उसी से आपका रिवर्स हो सकता है. हो जाएगा कि हो सकेगा? हो सकता है. आप अगर हो जाएगा. डेडिकेटेडली करेंगे 100% हो जाएगा. टाइम हम नहीं बता सकते, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है. किसी को 3 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर भी लगता है. क्योंकि आपका प्रॉब्लम जितना पुराना है, ऐसा तो नहीं है ना कि हम एक आपको मैजिक पिल दे देंगे और वो खत्म हो जाएगा. तो बॉडी टू बॉडी डिफर करता है. जी, ठीक, थैंक यू. Yes. Anushka ma'am, you can ask your Ashish sir, yes, you can ask your question. Good afternoon, ma'am. Anushka Gautam. Hello. Just a sec, Anushka ma'am. Can I take Ashish sir's? Okay, Anushka ma'am, you can ask your question. Yes, ma'am. मुझे स्लीप डिस्क प्रॉब्लम हुआ था दिसंबर में. L4 L5 में प्रॉब्लम है. तो उसके कारण मुझे ये कमर में पेन होता था और ये कंटिन्यू है अभी. उसके बाद भी कम हुआ है बट होता है. और अभी 1 महीने से मुझे लेग में पेन आ गया है, राइट लेग में. एंड बैकबोन के दोनों साइड 4 इंच छोड़ के जहाँ से ओरिजिन होता है सियाटिक नर्व का, तो वो दोनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा दर्द रहते हैं. और ये दर्द मेरा ऊपर तक जा रहा है, मीन्स L4 L5 से होता हुआ और आगे थोरेसिक रीजन तक की बोन दर्द हो रही है. तो आपको देखिए ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये कोई दवाई खाने से तो ठीक होने वाला नहीं है जब तक आप इंटरनली अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हो. और वो सिर्फ और सिर्फ आपको नेचुरली अपने ऊपर काम करके ही हो सकता है. राइट? ओके. तो हाँ, आपके जैसे हमारे पास और भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो ज्वाइन करते हैं, पर आपको करना पड़ेगा. जैसा कि हमने बार बार आप लोगों को बोला है, आप अगर अपने ऊपर काम करने को तैयार हो तभी आपको सोल्यूशन मिल सकता है, नॉट अदरवाइज. हाँ मैम, तैयार है. हाँ, तो आप एनरोल करिए कोर्स में और आपको क्रिया करके हेल्प मिलेगा. जी. रचना जी, मैं बात कर सकती हूँ? Yes, can I take up Ashish sir's question? He's been waiting for a long time. Then I'll take up Vanita ma'am's question. Yes, tell me Ashish sir. या मैम, एक्चुअली मैंने जो सेशन ज्वाइन किया है ये अपने फादर के लिए ज्वाइन किया है. उनकी एज है 78 ईयर्स और करीब 2 साल पहले उनका वो गिर पड़े थे एक जगह. सो उनके फीमर बोन में फ्रैक्चर आ गया था. उसके बाद उनका ऑपरेशन हो गया था, इम्प्लांट लग गया था. बट स्टिल अभी भी उनको चलने में दिक्कत है. मतलब वो पूरी राइट लेग उठाने में प्रॉब्लम पड़ती है. एंड ही इज यूजिंग वॉकर टू वॉक अराउंड द हाउस. सो आपके प्लस उनका सेकेंडरी इशू है कि उनका एक नर्व प्रेस हो रही है L4 L5 के आसपास, जिसकी वजह से व्हेन ही वॉक्स आपको 50 मीटर और सो, 50 मीटर भी नहीं बल्कि 30-40 मीटर्स के बाद ही
यूजली वो नमनेस आने लगती है। सो उसके बाद अगर प्रॉब्लम पाँव की नहीं भी हो तो भी वो नमनेस के कारण उनको बैठना पड़ता है एंड ही हैज टू टेक रेस्ट। सो डू यू थिंक कि अष्टांग चिकित्सा कैन हेल्प इन दिस केस आल्सो? He is 78 years old, 100% weighing around because 90 kg. we have participants of his age as well. तो उनको करना पड़ेगा। अगर वो अपने ऊपर काम करने को राजी है तो टाइम तो देखिए लगेगा क्योंकि उनका एज भी है। ओके, तो पर उनको सिम्टम्स में बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, तो जैसे उनको लेफ्ट लेग उठा पाते हैं पर राइट लेग नहीं उठा पाते, तो उसका क्या मतलब आप जैसे जो भी डायग्नोस करके करेंगे उसके बाद, so most probably you can see कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, राइट? हाँ, तो वो स्वामी जी डायग्नोसिस करते हैं। जब आप लोग प्रॉब्लम्स लिखते हैं ना तो स्वामी जी डायग्नोसिस करते हैं और फिर वो रूट कॉज तक पहुंच के और फिर हम लोग वो कस्टमाइज कुंभक आपके पापा को देंगे। ओके ओके, बट आपके जो पुराने केसेस रहे हैं उनमें इतने ओल्ड एज वाले पीपल दे आर आल्सो एबल टू फॉलो इट प्रॉपर्ली? देखिए हमारा इसीलिए जो हैंड होल्डिंग रहता है ना कि आपको वीडियोस भी मिलती है, बस जो कर रहा है अगर उनको नहीं समझ रहा है थोड़े उनके घर वाले हेल्प कर देंगे तो अच्छा रहेगा। ऐसे मोस्ट केसेस में लोग फॉलो कर ही लेते हैं क्योंकि हमारे मेंटर्स भी बार बार टच में उनके साथ रहते हैं। कुछ नहीं समझ में आता है तो मेंटर्स उनको अलग से बता देते हैं ऐसे। Yes, Vanita ma'am, you can ask your question. रचना जी, आपका कोई और अभी वेबिनार होने वाला है? क्योंकि मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ पर आज नहीं कर पाऊंगी। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप अपना आप क्या कर सकते हो, हम लोग वैसे तो हर वीक वेबिनार होता ही है। देयर आर 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन एनरोल योरसेल्फ, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, क्योंकि हमारा सीट्स भरने लगता है तो you can enroll yourself and you can tell our enrollment expert, that is Neha, to join on such and such date. So that's okay. ठीक है, okay, thank you. Yes, Meera ma'am, you can ask your question, unmute yourself. Sarita ma'am, the classes are in the evening, either 6, 6:30 or 7 o'clock. That depends from batch to batch. Anybody else who would like to ask their questions, please? Good evening, ma'am. मैम मुझे ये पूछना था अपनी मदर के लिए कि उनके कुछ ब्रेन इश्यूज हैं, इल्यूजन जैसे प्रॉब्लम है और मेमोरी लॉस का जैसे आफ्टर सर्जरी, तो क्या वो प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो सकती है? क्योंकि वो कोर्स मुझे करना पड़ेगा। डिमेंशिया है क्या? डिमेंशिया या अल्जाइमर्स है? नहीं, डिमेंशिया तो नहीं, उनको इल्यूजन होता है, मतलब जैसे कोई बैठा है, कोई खड़ा है, कुछ इस टाइप से इल्यूजन होते हैं उनको। मेंटली उन थोड़ी डिस्टर्ब हो गई। हाँ, आफ्टर सर्जरी मैम, नी रिप्लेसमेंट। तो ये आराम से देखिए, जब आप कुंभक करते हो ना, आपके माइंड, फिजिकल और मेंटल बॉडी दोनों के ऊपर काम करता है, क्योंकि कुंभक जब आप कर रहे हो तो इंटरनली ब्रेन के ऊपर भी काम करता है और रेस्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर तो काम करता है। बट वो कोर्स तो मैम मुझे करना पड़ेगा और मुझे उनको सिखाना पड़ेगा क्योंकि वो अभी इस पोजीशन में नहीं है। कैन इट पॉसिबल? Yes, it's definitely possible. Why don't you also take the benefit of the course? Okay, right. Thank you, ma'am. Thank you. Anybody else with questions? Okay, Dr. Bhavna is asking solution for chronic sinusitis and loss of smell. Dr. Bhavna, you can leave your number. Our sister concern runs a program for respiratory illness, so we'll pass on the number. You can connect with them. Amita ma'am, it will be the dates of complete second module starting on 12 July. So it will be shared in the class group. Otherwise, Neha, can you please share it to Amita ma'am? You can ask your question. Hello. I'm expecting some guests. Hello. So I want to know the dates. Can I ask my question? Yes, sure. Yeah. Will it help in tinnitus and hearing loss? Yes, it will. Again, tinnitus is some nerve issue, right? So when we say neuromuscular, we are dealing with the nerve degeneration and as well as the muscle degeneration. So tinnitus, it will definitely help. Hello. So, can you hear me?
Hello. Yes. Is there any number I can get in touch with? I would like to know more. I have more questions. Okay, can you share your number? Or I have Neha- shared it privately in the chat. Okay, your name, please. Jyoti. Jyoti. Hello. Neha, can you please take this into account? Jyoti ma'am has shared her number. Please call her up. Okay. हेलो सोनल Yes, शाह thank you मेरे so को भी much. थोड़ा फोन करेंगे, मुझे जानना है फूड ड्रॉप के बारे में। हेलो SD शर्मा बोल रहे हैं क्या? कौन बोल रहे हैं? प्लीज रेज योर हैंड। SD Sharma speaking. हाँ? SD Sharma speaking. Yes, I will just take up the question of Mr. SD Sharma, and then No, I will I take just up the want- rest of the questions. Yes. Hello. After Yes, the sir. course, will we have the ability to find out the root cause? सर आप रूट कॉज फाइंड आउट करके क्या करेंगे? आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप रूट कॉज आप नहीं, हमको डॉक्टर जैसे हमारी एबिलिटी, बिकॉज आई एम ऑलरेडी इन द वेलनेस पार्ट ऑफ इट, सो आई वांट टू डेवलप द स्किल। सर ऐसा है ना कि स्वामी जी बोलते हैं कि वो स्किल कस्टमाइजेशन के लिए ना वो बहुत साल लगता है और बहुत डीप नॉलेज चाहिए, ठीक है ना? तो वो स्किल आपको अगर जुड़ना है हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हो। नहीं, जुड़ जाते हैं, देयर नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आप अपना नंबर लिख दीजिए और लिख दीजिए उसमें कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, फिर हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। So will I give it on WhatsApp? You can write it on WhatsApp. I want to be a part of or your organization. Okay. Yes, Right. Mangal ma'am, you can ask your question. I have this problem. orthostatic. Can we have some silence, please? Mangal ma'am is trying to ask a question. Hello. I can. Yes, Mangal ma'am. I have in my leg. Mangal ma'am, please unmute yourself. Sorry. I have this tremor in my legs, which is called orthostatic tremor, and I also have restless legs. Okay. Restless leg syndrome. That is what the doctor said. Do you think it will be okay with Ashtaang Chikitsa? 100%. आपके जैसे बहुत सारे participants हैं with similar problems. Acha. And what will be the last day for payment? Because I need to ask my daughters. I am 72, so like my daughters handle all my money issues and all. So will it be? You can pay it in Monday if you want to join this month, this week. Oh, thank you so much. Bless you, bless you, bless you. Thank you so much. Thank you. Swayam Prabha sir, you can ask your ma'am. You can ask your question. I want to ask. Swayam ma'am, you can ask your question. Hello. Yes. Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. My problem is L4 and L5. Okay, disc problem. And then most probably in the first week of August, I may go to US. So what about the timings to follow there? That depends, ma'am, in which state you are, because our timing is going to be in the evening. So you'll have to check with your US time. Okay. Same like 6 and 7? Are you going to follow? Evening 6 o'clock then till 7 o'clock? We'll be following that time, yes. Okay, then can I pay through Google Pay? Yes, you can pay through Google Pay. Through Google Pay, okay. Yes, Thank in you. the webinar group, we will share all the details, don't worry. Okay, thank you. Thank you. Sonal ma'am, you can ask your question now. My husband has food drop, तो वो है ना चलते चलते गिर जाते हैं, उनका बैलेंस नहीं रहता है।
तो उसके लिए मुझे करना है। और मुझे भी है ना वेरिकोवेन है और अभी इन्फ्लेमेशन है। मेरा EASR 75 हो गया है, लेकिन पता नहीं चलता है। डॉक्टर इज टेलिंग वो स्ट्रेस की वजह से है और टेंशन की वजह से है, और पूरे जॉइंट्स में सब जगह पे पेन्स है। तो सोनल मैम आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको और आपके हस्बैंड दोनों को फायदा होगा, ठीक है ना। फुट ड्रॉप तो ऐसी चीज है, हमारे पार्टिसिपेंट्स में एक गुजरात के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने ज्वाइन किया था और उनको फुट ड्रॉप में से आराम मिला था, ठीक है। तो आपका और मतलब आपके वो हस्बैंड का अपने आप दोनों का नहीं जो चल प्रॉब्लम पाते है, हैं। हाँ हाँ, वो अपने आप में नहीं चल पाते हैं अकेले। उनको वॉकर लेके अंडरस्टैंड। या किसी को हाथ पकड़ के ही चलना पड़ता है। एंड ही इज ऑन द जॉब, जॉब पे जाते हैं। हाँ, तो आप उनको टाइम निकाल के बोलिए हमारा चिकित्सा करे, तो उससे उनको फर्क पड़ेगा। तो टाइम क्या रहता है मैडम आपका? शाम को 6, इस बार हम लोग 6 बजे शुरू करेंगे, 6 या 6:30 बजे। उसके पहले का कोई टाइम नहीं है मेरे लिए? और नहीं, हम लोग का कोर्स वो ना आते शाम हैं ना को तो ही मैं होता उनके है। पीछे। हाँ, नहीं, हमारा कोर्स सारा शाम को ही होता है। ओके। और उसके बाद लेट में भी है क्या? हाँ, 6 6:30 के बाद भी है क्या दूसरा कोर्स? नहीं 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 नहीं, वही एक ही बैच है। एक ही बैच है? एक ही हाँ, बैच है, ओके। या I'll pay. ओके, Okay, थैंक यू। thank you. Yes, anybody else who would like to ask the questions? I want to ask मैम, Yes. मुझे बहुत सालों से सर्वाइकल प्रॉब्लम है और अभी 1 महीने से मुझे लेफ्ट नी में पेन हो गया और स्वेलिंग हो गई है। अच्छा, क्या रीजन है पता नहीं। हाँ, तो आप जैसे ही आप प्राण शक्ति डायग्नोसिस आपका होगा ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम क्यों है और धीरे धीरे बॉडी में पेन क्यों बढ़ रहा है। ओके, Vandana ma'am, the duration of one class is 60 to 90 minutes. Or Anushka Gautam ma'am, which type of therapy is used in Ashtaang Chikitsa? Kumbhak therapy is used in Ashtaang Chikitsa. So I believe nobody else has any other question to be asked. और कुछ भी question आपका होगा तो please without hesitation write in the WhatsApp group and I will take it up with Swami ji and get back to you. Thank you so much. Namaste. Stay well. Stay secure. Good night. What is kumbhak therapy? कुंभक थेरेपी इज द एफर्ट मेकिंग मैकेनिज्म। जब आप कुछ भी करते हो, अगर आपने स्वामी जी का वीडियो सुना है, आप कुछ भी काम करते हो ना, एफर्ट लगता है, तब आपका सांस रुकता है। तो वो कुंभक थेरेपी हम लोग रीडायरेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स डिजीज, कि जब आपको कोई भी बीमारी है उसका रूट कॉज कहाँ पर है। वी आर नॉट वर्किंग ऑन दी कि बस इन्फ्लेमेशन है उसको ट्रीट कर दिया, नहीं। आपका रूट कॉज तक जब तक हम उसको ठीक नहीं करते हैं, आपका जो अपेरेंट पेन है या अपेरेंट इन्फ्लेमेशन है वो ठीक नहीं होगा। ओके, थैंक यू सो मच। गुड नाइट, स्टे वेल, स्टे सेफ।